No, reactions been really good यार, surprising. मुझे मैंने देखी नहीं उस वक्त, सपना ने देखी थी. I've seen it. How was it? Tell me. Yeah. I'm pleasantly surprised. Well, I mean, it's difficult to watch yourself, I think. For me, anyway, I think we're both the same. Yeah. It's you watching yourself like, ooh, giggling away. Like, oh no. So, You but excited for 60th Filmfare Awards? Because this is the only award function experts say that they honest. Do you agree with it? yes, Yeah. yes, Yeah. yes. How excited are you? We are very excited because we started the year also on the cover, so we're very happy that Yeah, we're very been happy, we've yeah. been a part of it. So it's Yeah, we feel a lot closer to Yeah. Filmfare now that we've been on the cover. like we So, yeah. like we're We're rolling. We're rolling. तो सिर्फ खामोशियों को प्रमोट करोगे या फिर किसी की खिंचाई भी करोगे, होस्टिंग भी करोगे या एनीथिंग आउट ऑफ द बॉक्स? नहीं अभी तो उड़ते हुए आए हैं ना हम लोग. We hope so. Let's see. We would like हवाई to जहाज़े be पे. fun. Yeah. Oh. Oh, This year? Dolly की डोली. But it's not about. I'm not getting. But best of luck to everyone. Yeah, I'm very excited to watch it. All my friends in there, so yeah. Apart from खामोशियाँ, I think आवाज़ें ज़्यादा होंगी. We hope to work more, and I'm looking forward to a lot of nice, interesting projects. So, yeah. New ventures, new collaboration you have lined up? Sorry? New ventures, new collaboration lined Yeah, up? new ones. Can Yeah. you just tell us something? I mean, it's Pooja Bhatt's next film, so but that starts in May. So yeah. Obviously. See, this is not IPL where you can ask us like. We're gonna miss Sachin, but really looking forward to Dhoni's performance and form because he's quit Test cricket, so yeah. And then the entire team, yeah, no names. Are you singing? I would love to sing, but nahi abhi nahi because it's not fair because I think And Jai Hind, that's it. Okay, Jai Hind. Jai Hind, Vande Mataram. Wishes for the future. Yay. And wish you all a very happy Republic's Day, and yeah, enjoy. Well, actually, it's not. It's not. I mean, yeah, because I think this rumor has been going on for a while because it's of a horror. the perception, but it's not. It's a love story, and it's a love story with and a psychological thriller. So I think it's that aspect that people think it's a horror. It's not. All the best. Thanks. Thank you. Okay. Whenever I see you next. What are you wearing tonight? Well, I'm wearing a Herb Ledger dress and accessories from Curio Cottage. This very beautiful ear cuff, and I'm really excited. I'm excited about my earrings. I'm excited about 60 years of Filmfare, living the dream of walking the red carpet, being an actress, and such a pride, such a moment of pride. I've always watched Filmfare Awards as a child, grown up watching Filmfare Awards as a child. So this is like almost like a dream come true. Hi, मैं हूँ अमृता राव और सारे दर्शकों को मेरी तरफ से a very very happy Republic Day. यहाँ पे Thank you. I'm wearing Alina Percent. लेकिन ये सब हेडगियर्स कहते हैं, ये क्या ऐसा डिस्ट्रैक्ट है? बहुत खूबसूरत ड्रेस थी. It has a really beautiful bag, जिसकी वजह से it has a hoodie जो मैं ऊपर से पहनती हूँ. प्लस मैं मैरीकॉम के लिए नॉमिनेटेड हूँ, तो मैंने सोचा कि बॉक्सर हुडी का एक ओड हो जाए. तो 60th Filmfare Awards experts say that यही कैसा लौता अवार्ड फंक्शन है जो ऑनेस्ट है. Do you agree with it? How excited are you? I think कि award functions you never know. It's a jury that decides, and हर इंसान की अपनी opinion होती है, and
ओपिनियंस के ऊपर अवार्ड्स होते हैं. So some people will be happy, some won't, but an award is an award. लेकिन एक एक्टर एक एक्ट्रेस पूरे साल मेहनत करते हैं टू गेट द ब्लैक लेडी होम एट द एंड ऑफ द ईयर. आपने मैरी कॉम से कर दिया, तो ये साल आप क्या इनोवेटिव क्रिएट करने वाले हैं? इस साल मैं बहुत अच्छी फिल्में कर रही हूँ. आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. इस साल दिल धड़कने दो आएगी, विच इज़ अ वेरी कंटेम्प्रेरी स्टोरी ऑफ अ डिसफंक्शनल फैमिली. फिर बाजीराव मस्तानी आएगी, इन विच आई प्ले अ इंडियन पेशविन क्वीन. देन आई एम ऑल्सो डूइंग गंगाजल 2 एंड मैडम जी. तो वो दोनों कंप्लीट एक में मैं कॉप प्ले कर रही हूँ, बिकॉज आई एम प्लेइंग अजय's फीमेल काउंटर पार्ट. सो एक में मैं कॉप प्ले कर रही हूँ और एक में एक आइटम डांसर. सो इट्स अ रियली नाइस वेरिएशन ऑफ But फिल्म. in this season we haven't seen. I think I've always been a risk taker. I used to take risks in my career and I considered that risk taking. Now I take risks in my clothing and I consider that risk taking. So it's phases that I go through. But Priyanka, this season we haven't seen you hosting और टांग खिंचाई करते लोगों की हॉस्टिंग में. हम कब देखेंगे प्रियंका को कि हाँ प्रियंका? You know, hosting में बहुत वक्त लगता है और बहुत effort लगता है. And इस साल because I was shooting for बाजीराव while all the award ceremonies were happening, I couldn't take on a lot of shows. और मैं आधा काम करना पसंद नहीं करती. Not just Kangana, but I think Rani, Alia, Kangana, there were Tabu, there were so many wonderful female performances this year, जिनको आप deny नहीं कर सकते. This year is definitely the one for the ladies. The boys should just sit down and watch. Republic. My favorite movie of the year is Queen. Republic Day versus Monday. Hi, this is Priyanka Chopra. Here's wishing everyone a really happy Republic Day. Thank you. दिस इज़ प्रॉब्ली मैं बहुत कम आती हूँ ऐसे फंक्शंस में, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है म्यूज़िक में कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन इट्स लवली टू बी एक्नॉलेज्ड. और जो गाना है नैना, वो बहुत ही अमेजिंग कंपोज़र जो अमाल मलिक हैं. ही इज़ अ 23-year-old बॉय. मुझे लगता है कि इट्स माई लक दैट आई एम गेटिंग टू वर्क विद लॉट ऑफ न्यू पीपल. आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज इट्स सेलिब्रेटिंग टैलेंट एंड सेलिब्रेटिंग फिल्म एंड लेकिन सिनेमा. आपके लिए ब्लैक लेडी कितनी इम्पोर्टेंट है Well, पार्टी के लिए? मैं तो बिल्कुल आई डन एन ओड टू द ब्लैक लेडी, माई वर्जन ऑफ द ब्लैक लेडी. तो मेरे ख्याल से मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं और मुझे लगता है ये सबसे पुराना अवार्ड्स है और बहुत मायने रखता है पूरे देश के लिए. इट्स बीन क्रेडिबल क्योंकि बहुत सालों से है और इट इज़ द 60th ईयर. दैट इज़ नथिंग टू अंडर एस्टिमेट. पूरे अगर वर्ल्ड में ग्लोबली देखा जाए कि बहुत ऐसे कम कंट्रीज़ हैं जहाँ पे एक ऐसे लगातार परंपरा रहा हो. आई थिंक फिल्म फेयर अवार्ड्स प्लेज अ बिग रोल. But at the end of the day, do you agree that this is the only award function that is honest toward the vision that they have it for celebrities? यू नो, आई एम नो वन टू, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ. मुझे लगता है मैं तो आई हूँ यहाँ पे सेलिब्रेट करने सिनेमा को, म्यूज़िक इन सिनेमा, क्योंकि मुझे लगता है म्यूज़िक हमारे सिनेमा में बहुत मायने रखता है और पूरे देश में ऐसे एक इंडस्ट्री है जहाँ पे म्यूज़िक इतना बड़ा रोल प्ले करता है. तो आई कम एज अ म्यूजिशियन, आई कम टू सेलिब्रेट गुड वाइब्स. Now 26 January को खाली 2 लाइन हो जाए हमारे व्यूवर्स के लिए. 26 Jan and the wishes for the viewers. Happy Republic Day. Here's to open minds. Here's to changing the country, changing attitudes, and here's to celebrating women so much more. क्योंकि मुझे लगता है कि महिलाओं को अगर हम सेलिब्रेट करें, जो हमारे 50% पॉपुलेशन, 50% पॉपुलेशन है, तो वी आर ऑल टू प्रॉस्पर एंड गेन फ्रॉम इट. तो आई थिंक इट शुड बी अबाउट द women population and celebrating them this Republic Day from my side. Thank you so much. Well, I'm not getting the black lady. I'm just
celebrating with the Black Lady tonight because it's also my 60th year, and I love film fair. You're born on it. I loved movies. As a kid, I used to be like, will I ever be invited? For about a year, I am doing fashion shows with film fair. So I think it feels very good, and to having done something that you want to do. And also this is a great show to do. It's the beginning of the year. It's all new looks, and you're presenting new colors, new looks, which you think are going to do well this year. लेकिन एक्सपर्ट्स से दैट कि यही एक ऐसा होता अवार्ड फंक्शन है जो ऑनेस्ट है अपने अवार्ड्स को लेके, तो डू यू एग्री विद इट? Well, I have no one to comment on that because मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत busy हूँ. But like I said, film fair is special because we've grown on it, and of course it is a very honest and a very correct award. Only Republic Day wishes for the viewers is 26th Jan. Hi, this is Manish Malhotra and wishing all of us a happy Republic's Day. जहाँ देखो वहाँ क्वीन और हैदर का ही नाम है. हाउ प्राउड डू यू फील एट द मोमेंट कमिंग टू 60th? जी बहुत कूल फील हो रहा है बिकॉज एक्चुअली विकास, मैं, आलिया, अभी हम लोगों ने शानदार की शूटिंग ख़त्म की है और वी कीप बम्पिंग इनटू ईच अदर द अवार्ड्स एंड इट फील्स सो नाइस टू सी दैट पीपल दैट यू डन अ फिल्म विद आर बीइंग अप्रिशिएटेड फॉर देयर वर्क. ऑनेस्टली जब हम लोगों ने शानदार की शूटिंग शुरू की थी तो उसको कहीं से भी बड़ी फिल्म नहीं माना जा रहा था बिकॉज तब तक क्वीन रिलीज़ नहीं हुई थी, हैदर भी रिलीज़ नहीं हुई थी, आलिया की भी आई थिंक 3 फिल्में इस साल आई हैं जो बहुत पसंद की गई हैं. So it's really amazing that things have been so good for all of us this year, and we hope that will help people like Shandar and come and watch it more. And it just feels very, very nice to see people that you've worked with and you've really had a good time working with go up on stage and be awarded and be rewarded and be appreciated. क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर वो ब्लैक लेडी भी ले पाए, तो आपने गए साल मेहनत तो करी हैदर से. यार मैंने आज तक कभी अवार्ड्स के लिए मेहनत नहीं की. आई हैव टू बी ऑनेस्ट अबाउट दैट. आई एम हियर एट द नॉमिनेशंस एंड आई फील वेरी स्पेशल टू बी नॉमिनेटेड. But I think that you cannot work towards wanting to win an award. The only thing that I work towards is the love of the people, you know. And I really feel that I have been supported by people who have liked my work when I've done some really crap films. And they've always walked out saying, yeah, the film wasn't good, but we like Shahid. And that's very, very kind of them to do that. So really for me, that's most important. Shahid, like you said, Shandar wasn't meant to be a huge film, but now everyone's talking about it. Yes. Is there a lot of pressure talking as well after Heather, after Alia's couple of successes, you know? Is there a little bit of pressure on the team? I mean, I've been doing this for 11 years, so I'm used to pressure. I actually look at it very positively because I think it's very good for the film. And there's no other way that one should see it. And I think we're working with great people. The team is fantastic. We have a really good set of technicians. We have a fantastic director who's had a great year. We have a heroine who is having an amazing year as well. It's been a nice year for me. So it's great to work with such people. Shahid, also you've been posting on your Instagram. I have to ask you, your new house is getting ready to be made. Like, how are you fronting that, and by when are you? You know, the thing with a house is whenever you feel it's ready, you realize it's not ready. So I'm just hoping it gets done soon and I shift in soon. But I'm also a little feeling a bit weird because I'll be moving away from family. I stay very close to my father. He stays just 1 floor below and I stay 1 floor above. So I'm feeling a bit weird about the fact that I'll be on my own and a little away from family. So I might just delay shifting into the house. But yeah, work is on and hopefully it should be ready soon. Which side is it true that you are getting engaged also? Because there are people saying that you're gonna get engaged soon. मैंने देख पिछली बार भी हाथ दिखा दिया था. इस बार भी देख लो. No, I'm not getting engaged. Sorry? Which I liked this year. I really liked Queen. I don't know. Yeah, so Queen I thought was really good. Shape या hairstyle कोई नए project के लिए है या फिर just for that? Right now I'm unemployed again. I don't start shooting till March, so this is my figuring out what I want to look like in my next movie kind of look. बाल मेरे पीछे जेल हो जाते हैं जो शानदार में हो रहे थे तो वो कंटिन्यू हो रहा है. So this is just somewhere in the middle. It's not a look for anything. Republic Day. This is my look for working on the house. Trust me, I don't go like this for the house, but yeah. Republic Day is on. Okay.
3 days to go to the overseas for the people. Wishing everybody a very, very happy Republic Day. It's always fun watching the parade. It's amazing to be a part of a democracy like India, and yeah, hoping for better times, a better year, and a lot of happiness to everybody. World Cup is right around the corner. You're supporting Team India. Which player? No. Why will I support India? Yeah, it's going to be a difficult World Cup. It's difficult conditions. We're not going through the best form, but we have an amazing set of players. And usually India does very well when they start off badly. I've always seen that जब भी ऐसा लगता है लोगों को कुछ नहीं होने वाला है तो कुछ अच्छा हो जाता है. So they've not been having the most amazing series, but sometimes they rise up to the occasion really, really well. And they definitely have the players to do so. So I'm fully rooting for India. And yeah, I'm a big cricket buff, so I'm totally rooting for India. Only the post for the camera. We are done. Thank you so much. Thank you. I think I can compare it to the Oscars. But people say that, experts say that कि फिल्मफेयर एक ऐसा अवार्ड है जो ऑनेस्ट है चीज़ों को लेके. Do you agree with it? जो? चीज़ों को लेके ऑनेस्ट है. Well, that's very rude to say that the other award functions are not. But yes, Filmfare, since क्योंकि Filmfare एक ऐसा पहला award function है जो कि जाना जाता है कि is very fair with the game. So जाहिर सी बात है कि जी हाँ, ये रेपुटेशन जो है बरकरार है, और पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ और पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ that they'll always maintain that reputation. लेकिन क्या कुछ आप आउट ऑफ द बॉक्स करने वाले हो अंदर, बिकॉज फिल्मफेयर ब्लैक लेडी घर लेके जाना सबके लिए बहुत बड़ी बात होती है. ब्लैक लेडी तो ओनली लेडी दैट गॉट टू टेक इट होम बिकॉज न्यू ईयर, न्यू बिगनिंग. So anything special this year you wanna do it? Well, just wishing myself to work very hard. I have a exciting film releasing this year, Prem Ratan Dhan Payo. How's it shaping So up? it's shaped up really well. It's shaping up well. A lot of work is still left, but hopefully a Diwali release. So looking forward to it. How was the shooting with Salman and Sonam? Great. Sonam, I worked with before on Players. She's a great person, great girl. She's evolved a lot as an actor, and I love to see the confidence in her right now. As far as Salman Bhai is concerned, he's like an elder brother. His words are less, that you use to praise him. He's a great human being. He's so helpful and very supportive. So yeah, all my love and luck to him. आपने कल्चर एंड स्टूडियो के आजू बाजू के जितने भी गाँव थे, विलेजेस थे, उनको पेड कर दिया है. बहुत अच्छे डोनेशंस, हिडन डोनेशंस किए हैं. उसके बारे में कुछ बताइए, बिकॉज पीपल आर सो ईगर टू नो अबाउट इट. Well, I'm somebody who generally doesn't like going out there and talking about what we do about donations, etc. But that was something I'm extremely proud of. It so happened that one day we were just shooting, and Salman Bhai came and he said, Neil, there's this very important drive that we want you to be a part of. It was very kind of him to consider me even worthy of it, and he said that will you be a part of it? So I said, of course I'd love to be a part of it. Very less did I know that this was the drive, and it would shape up this way. I'm extremely proud of it. But Katrina took the initiative for Bajrangi Bhaijaan, and Right. she has carried away the legacy, and she's just doing all across the world. तो इतना Right. अच्छा काम कर रहे हो. तो प्रेम रतन धन पायो भी अच्छी होगी. तो कुछ हिडन चीज़ बताए जो किसी को पता ना हो. Well, Prem Ratan Dhan Payo, I don't want to spill the beans actually, but this is a film that one should look forward to. Surajji's film that has it's very different from a very typical Suraj Barjatya film. It is a family-oriented family drama film, but it's set in a royalty family, and it's an opus. So yeah, looking forward. Republic Day is on floor, 26 January. कुछ आप गाना गाना चाहोगे या विशेष देना चाहोगे? Well, wishing all the viewers a very happy Republic Day. Congratulations of being an Indian. God bless you. Thanks. I am definitely. Actually, Filmfare is on the same day as the release of our film, so it'll be an extra special night. Absolutely. Pallavi, how has this year been shaping up, and what are you looking forward to this coming year? I think this last year I've just been working on Hawai Zada, so it's shaped up really well because it's a film that we've all made with a lot of love, and we're very passionate about. So now we're starting the year with the release, so I think only good things can come. मतलब भी एक स्टार, एक एक्टर और एक्ट्रेस का एक ही सपना होता है कि ब्लैक लेडी बन ले जाए. वो पूरे साल इतनी मेहनत करते हैं कि हाँ, एट द एंड ऑफ द ईयर ब्लैक लेडी. तो आप ये साल क्या नया करने वाले हो, क्या इनोवेटिव करने वाले हो, क्या क्रिएटिव करने वाले हो? Actually, I think जो हमने करना था वो पिछले साल कर दिया, but it's coming to you this year. I hope that my director Vibhu Puri gets
noticed for his film हवाई ज़्यादा, जो उन्होंने बहुत प्यार और मेहनत से बनाई है. Might have lined up more projects after हवाई ज़्यादा. Tell us a bit Yes, about that also. I've actually signed an NDA, so I can't. But for the next week, I'm only concentrating on Hawai Zada. So I hope you all go to see it and you all love it. So are you gonna perform inside? Gonna do something out of the box inside, or are you gonna co-host? What is it? I have come to attend and support Filmfare because I've always loved being a part of Filmfare. Sorry? Oh, do they? Okay, let's see. Let's see what may come inside. Pallavi, World Cup is right around the corner. Yes. I'm sure you follow cricket. I back do. in Australia as well. Who do you think is the biggest team competitor to Team India? Who are you following? I mean, I have to say it's between India and Australia because they're the two countries closest to my heart, and the World Cup is in Australia this year. So I know that they put up tough competition, but I wish the Indian team all the best. Thanks. Thank you guys. Republic. Oh yeah. And I'd like to wish everybody a happy Republic Day. Anji? Ghana? What Ghana? I can sing patriotic songs. Jana Gana Mana Adhinayak Jaya He Bharat Bhagya Vidhata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravid Utkal Banga. I can't believe I sang the next one. बहुत excited. It's like family to me. It's like family to me. So obviously we are all. I'm sure everyone is. लेकिन जहाँ देखो वहाँ हैदर ही हैदर है. तो कितना प्राउड फील करते हो आप, क्योंकि हर एक अवार्ड पर जिसमें आप दो अवार्ड लेके जाते दिखते हो. प्राउड और खुश दोनों महसूस करती हूँ, क्योंकि एक बहुत ही पसंदीदा रोल के लिए अवार्ड मिला है और बहुत मेहनत की है सबने, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है. तो मुझे हर एक एक्टर या एक्ट्रेस का एक ही सपना होता है कि साल के एंड में ब्लैक लेडी बन ले जाए. तो ये नया साल है, नई बिगनिंग है, तो आप वैसे इंटेंस रोल करोगे या कुछ स्पेशल या इनोवेटिव या क्रिएटिव करने वाले ये साल? मुझे कॉमेडी करना है और आई होप कि कोई अच्छी कॉमेडी मुझे ऑफर हो. क्या बोल रही है? क्या बोल रही है? कुछ हाँ बहुत अच्छे लुकिंग यार, तुम बहुत तुम कहाँ से निकले हो? तो जूही मैम, आपने हैदर देखी? हैदर हर जगह पे हैदर ही हैदर है. अरे जाने दो, जाने दो. कितने एक्साइटेड हो 68th फिल्मफेयर अवार्ड्स के लिए? Very excited because this is first time I'm coming over and मेरी फिल्म के बाद काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरा नॉमिनेशन भी होगा. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस. लेकिन हर एक एक्टर हर साल इतनी मेहनत करता है ब्लैक लेडी में लेके जाने के लिए. जी. आप क्या करने वाले हो आज और आगे? एक्चुअली मैंने मेहनत इस फिल्म के लिए काफ़ी की, क्योंकि रियल कैरेक्टर पोर्ट्रे करना इज़ वेरी टफ थिंग. उसके लिए मैंने दिन रात किया, खून पसीना लगाया. तो उसकी मेहनत आज मुझे रंग ला रही है, क्योंकि क्रिटिक्स ने और पब्लिक ने, फिल्म फ्रेटर्निटी ने, सब ने मुझे पसंद किया, मेरे काम को पसंद किया. दैट्स व्हाई आज मैं यहाँ पर हूँ. और फिल्म फेयर जीतने का सपना तो मेरा बचपन से ही था. जब से मैंने होस्ट संभाला और एक्टिंग के बारे में सोचा, तब से ब्लैक लेडी को हाथ में लेके मैंने बहुत सारे इमेजिनेशंस के वर्कशॉप्स किए. लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि फिल्मफेयर एक ऐसा लौटा अवार्ड है जो ऑनेस्ट है. क्या ये बात को आप? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा मानना बिल्कुल सही है. ये कहना भी सही है और मैं मानता भी हूँ इस बात को कि उन्होंने हर बार न्यू टैलेंट को, जो टैलेंटेड है, जिन्होंने काम अच्छा किया है, या जो वैसे भी जो स्टार्स हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, उन्हीं को नॉमिनेट करते हैं और उन्हीं में से वो बेस्ट को चूज़ करते हैं. 26 जनवरी है, ये रिपब्लिक डे है, तो आप क्या कुछ स्पेशल प्लान्स हैं आपके और कैसे विशेष विशेष फॉर द व्यूअर्स? मेरे सिक्स के प्लान्स तो भी मेरे कुछ खास हैं, फ्रेंड्स के साथ ही सेलिब्रेट करना. हाँ, लेकिन ये है कि हम सब इंडिया वाले सब चाहते हैं कि हमें सेफ इंडिया मिले, टेररिज्म से फ्री हो जाए. सो मैं चाहता हूँ कि हम फाइट करें इसके अगेंस्ट, टेररिज्म के अगेंस्ट, और वुमेन के प्रति सेफ्टी के लिए हमें कुछ स्टेप उठाएं. यही ये मुद्दा है. सॉरी, हैप्पी रिपब्लिक डे. थैंक यू. थैंक यू. I'm very excited. It's my first award ceremony that I'm attending, and it's the pre-awards night, so I'm really looking
towards having some fun. लेकिन हर एक एक्टर और एक एक्ट्रेस का सपना होता है कि पूरे साल मेहनत करें और एंड ऑफ द ईयर वो अवार्ड लेके जाए। तो आप ये साल क्या करने वाले हो फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर? जी बिल्कुल, मैं दुआ कर रही हूँ कि मेरा नॉमिनेशन निकले। डेब्यू का नॉमिनेशन नहीं निकला है और हर एक्टर की तो ऑफकोर्स ये ड्रीम होती है कि फिल्म फेयर कभी ना कभी तो जीते। But experts say that Filmfare is the only award that is honest at the moment today. Do you agree with it? Well, yeah, I mean all awards are honest, aren't they? Perfect. So what's next? Any line of project you'd like to share with the viewers? There's something that's happening at Mr. Bhansali's production house. That's rolling, I think, in March. So let's see. तो अंदर आप क्या धमाल करने वाले हो आज वो भी बता दीजिए अगर किसी की। मैं देखती हूँ क्या होता है। मेरे कुछ फ्रेंड्स अंदर है तो जाके धमाल करती हूँ, लोगों से मिलती हूँ। 26 January is on floor next 2 days. Any song would you like to dedicate to the viewers and fans? Patriotic song. My favorite patriotic song is A.R. Rahman's Vande Mataram. 2 lines if you don't mind. One. नहीं मैं गा नहीं। Country. I don't know. I can't sing. Only the wishes. Sorry. Wishes for the viewers. Vande Mataram. Wishes can you share? Wishes. Okay, wishing you a very, very happy Republic Day. We are proud to be Indians. Thank you. क्या कहूँ फिल्म फेयर अवार्ड्स के बारे में क्या कहूँ। इट्स अ ग्लैमरस शो। हम सब वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू इट। फिल्म फेयर अवार्ड्स ऑलवेज गो टू द मोस्ट पॉपुलर फिल्म्स। सो या आई मीन इट्स अ ग्रेट शो। आप ये एक बात को मानते हो क्योंकि एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि फिल्म फेयर एक ऐसा लौता अवार्ड्स है जो ऑनेस्ट है चीज़ों को लेके या फिर ज्यूरी को लेके। डू यू एग्री विद दिस पॉइंट? तो अच्छा, अब आप मुझे ये वाला क्वेश्चन पूछेगा, आपको क्या लगता है मैं क्या कहूँगी यहाँ पर? Whatever you feel like. क्या पसंद? मैं कहूँगी कि मैं फिल्म फेयर की पार्टी में जा रही हूँ मनीष मल्होत्रा का शो देखने। बाय बाय। ये साल आप क्या करने वाले हो वो जानना चाहूँ। ये साल मैं सोच रहा हूँ कि अगले साल मैं ब्लैक लेडी घर पे लेके जाऊँ और क्योंकि मेरी आने वाली फिल्म अभी जो भी है वो नेक्स्ट लास्ट मतलब सेकंड हाफ ऑफ द ईयर आएगी तो उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। Tell us something about your projects, line of projects. I'm right now working in प्यार का पंचनामा sequel, तो which is on floor right now. तो अभी उसी के लिए look forward कर रहा हूँ थोड़ा सा। Perfect. तो आइडिया Filmfare 60th Awards, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि यही एक ऐसा लौता अवार्ड फंक्शन है जो ऑनेस्ट है चीज़ों को लेकर। Do you agree with this point? I agree with it totally. यहाँ पे जो जूरी है या यहाँ पे जो भी सिलेक्शंस होते हैं उनके आप जब भी अवार्ड्स जिन लोगों को मिलते हैं, नॉमिनेट भी जो लोग होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, वो काफ़ी क्रेडिटेबल एक्टर्स होते हैं, काफ़ी उनका काम माना जाता है और वो देखा जाता है कि फिल्मफेयर अवार्ड्स इज़ वन ऑफ द अवार्ड्स जिसमें ये चीज़ उनके काम के हिसाब से अवार्ड उनको पेश किया जाता है। एंड आई एम रियली हैप्पी कि ऐसा यहाँ पे होता है and I'm really looking forward to it. But Karthik, can you sing? Because patriotic song गाना पड़ेगा। 26 जनवरी आ रही है, रिपब्लिक डे है, हमारे देश के ऊपर है। Please can you do something? मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। Only the wishes for the viewers. हाँ? Wishes for the viewers. Okay, wishes for the Republic Day. Republic Day. For the Republic Day. For all the viewers and from the side of Filmfare, I wish you a very happy Republic Day. Perfect. Thank you. Totally excited and it's like my first time in the Filmfare. I love to be part of that big event and awesome यार। लेकिन हर एक एक्टर का सपना होता है ब्लैक लेडी घर पे लेके जाने के लिए और वो लोग इतनी मेहनत भी करते हैं तो what you gonna? Of course मैं भी यहाँ like Filmfare के लिए आया हूँ और मैं चाहूँगा कि मैं भी एक ट्रॉफी अपने घर लेके जाऊँ तो let's see, hope for the best. Are you gonna perform on the award functions or just nominated? Just let's see. I'm just coming here so I don't know like. Yes. Yeah, of course. Gee, I love. I can say that like I like
Virat Kohli, and he's from Delhi, and like he's so energetic, like all the time focused. And I hope like last time we win the World Cup, so of course this time we do better than like last years. Right? Also, from that awards, which movie are you hoping takes away all the black lady? Which is your favorite? There's so many movies, yeah. There's so many movies, like but I like especially like that Shah Rukh Khan movies and Akshay Kumar movies, I can say. Give the Republic Day wishes for the viewers 26 January. Okay. Hello everyone, and wish you all the happy Republic Day. Chakade phate. Cheers. डायरेक्ट यहाँ पे आए हैं यार, डॉली प्रमोट कर रहे हैं, रिलीज़ है कल। बहुत खुशी है, अच्छी फिल्म बनी है, बट ये भी एक खुशी का माहौल है तो इसको सेलिब्रेट करने आए हैं। 60th फिल्म फेयर अवार्ड, तो कितने एक्साइटेड हो? एक एक्टर का ड्रीम होता है कि पूरे साल मेहनत करे और एट द एंड ऑफ द ईयर ब्लैक लेडी को ले जाए। लास्ट ईयर तो लेके गया था मैं, देखते हैं इस साल क्या होता है यार। सबके लिए अच्छा हो, पढ़ा लिखा भी है, तो आई होप कि बहुत सारी लेडीज़ आए करते हैं। बट डॉली की थोड़ी सी हाई एक्सपेक्टेशंस है लोगों को भी, सबके आई थिंक एक्सपेक्टेशन सही है क्योंकि फिल्म अच्छी बनी है, एंड आई होप कि एक्सपेक्टेशन सबकी जो है वो पूरी उतरेंगे। बेबी उनके साथ है, तो आपको नहीं लगता कि एकदम कॉम्पिटिशन भी है? नहीं कॉम्पिटिशन नहीं है, क्योंकि बेबी एक बहुत ही अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी लग रही है बेबी भी, और लेकिन बहुत ही डिफरेंट जॉनर है, तो उस हिसाब से दोनों की आई थिंक अपनी अपनी ऑडियंस हो सकती है। तो अभी अंदर क्या स्पेशल करने वाले हैं? अभी तो सबको मिलने वाला हूँ, देखता कितने लोग हैं कि नहीं है। रिपब्लिक डे विशेस दैट। Hi, I'm Rajkumar Rao. Wish you all a very happy Republic Day. Rajkumar, before you leave, what are the other films that you like this year? What are the other? I loved Queen a lot, not because it's my film. I just genuinely loved it. I really liked Heather a lot. Yeah. Thank you. एक्साइटेड हो 60th फिल्म फेयर अवार्ड्स को लेके? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि ऑलवेज फिल्म फेयर तो काफ़ी अच्छा रहेगा, आई एम श्योर। लेकिन आप कितनी मेहनत करते हो एक ब्लैक लेडी को घर में लेके जाने के लिए? बिकॉज एक्टर्स वर्क द होल ईयर, दे वर्क सो हार्ड टू गेट द ब्लैक लेडी होम। Yeah, I think it's a prestige, and of course everybody wants the sexy black lady. But there are tabloids and everything who pretend that you took Shahid Kapoor's bodyguard to just guard you out. Well, if he happens to be an ex-Shahid Kapoor employee, so that's the way it is. Right. Yeah. So experts say that Film Fair is the only award that is honest. Do you agree with it? Well, I wouldn't want to take the credit away from the other awards also, but I think it is also one of the best. Yeah. Thank you. Wishes for the viewers for 26th January Republic Day. Yeah, be Indian, have a great Republic Day, lekin also know your responsibilities towards your country. That's how you will be Indian. Right around the corner. Yeah. Which obviously you're supporting Team India. Yeah. What are the players you're looking forward to, and any other team that you follow? I do follow, but I don't know the lineups yet, so I will pick my favorites once I see everyone performing. But yeah, Team India, go. Awards तो कितने excited हो? I think it's 60 is a great number, and it's even better because I'm nominated this year. So yeah. आप तो बेस्ट विलन हो, सब कहते हैं ये, आपका क्या जानना है? क्योंकि हर साल इतनी मेहनत करते हैं ब्लैक लेडी को घर पे लेके जाने के लिए। आई थिंक हम लोग कोशिश यही करते हैं कि अच्छा परफॉर्म करें, फिर कुछ जूरी होती है वो सोचती है कि इन 5-6 लोगों को नॉमिनेट करना चाहिए और फिर उनमें से एक चुना जाएगा। आई एम रियली ग्लैड टू बी नॉमिनेटेड। बट रितेश, क्या ये बात आप नहीं मानते हो? एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि फिल्म फेयर एक ऐसा लौता अवार्ड है जो ऑनेस्ट है। डू यू एग्री विद दैट?
भाई इकलौता. I think everyone do their best. I think every award does their best. Is it? I have not watched news, so I have no idea. I have nothing to say because I haven't seen news. So I'll read the material and then comment on it. So 26 January is also. Happy Republic Day, everyone. Excited to Jackie Filmfare 60th Awards को लेके? I'm very excited because Filmfare is the most prestigious, and I'm here because to support Manish and Jitesh and the whole team of Filmfare. I really love them and really excited to be here. और बस अंदर जाऊंगा और देखूंगा क्या होने वाला है. लेकिन एक्टर और एक्ट्रेस पूरे साल इतनी मेहनत करते हैं to get the black lady. Yeah. I've still not managed to get one. I'm working hard towards it. I was hoping कि यंगिस्तान में nomination मिल जाए, but I'll work harder next time. Maybe next time. लेकिन आपके लिए सबसे बेस्ट मूवी कौन सी ये साल? Queen और PK, hands down. So Amir Khan for PK and Kangana Ranaut for Queen. लेकिन आप एक मेरी बात को अग्री करते हो कि Filmfare is the only award that is honest. Yes, the thing is that yes, it is honest, but that doesn't, so I don't want to say it, and I would want to be politically correct. But ठीक है. So 26 January is also Republic Day. तो कुछ special करना चाहोगे viewers के लिए? I would just want to wish all the viewers a very happy Republic Day. Go there, have fun, and I think be proud to be an Indian and make our country proud. Yeah. Ideally, I would like to, root for Yuvraj Singh. Unfortunately, he's not on the team. I don't know why. So that just says that there's politics not just in films, it's in cricket also. But yes, I would say Mahendra Singh Dhoni, Virat Kohli, Rohit Sharma. Yeah. Excited of Filmfare 60th Awards को लेके? Very excited. I hope to be nominated. This is my first debut year. So I'm excited. My first round of awards, yes. लेकिन एक्टर और एक्ट्रेस पूरे साल इतनी मेहनत करते हैं क्योंकि उनको ब्लैक लेडी घर लेके जानी होती है. एक्शन जैक्सन के अलावा और क्या स्पेशल करने वाले हो? अभी तो इस साल ये तो एक्शन जैक्सन ही था. अगले साल पूछेगा तो अगले साल hopefully maybe something. But Express News says that Filmfare is the only award जो honest है चीज़ों को लेके. Yes, and I think it's the oldest and it's the most prestigious. And it's a legend now. It's a legacy. So I think yes, it's the most prestigious. So only the Republic Day wishes for the viewers. 26 Jan is on. Okay. Hi, I want to wish all the viewers a very happy Republic Day. It's one of the biggest awards for our industry, and it just feels great that I'm a movie old now. लेकिन एक्टर और एक्ट्रेस पूरे साल इतनी मेहनत करते हैं ब्लैक लेडी घर लेके जाने के लिए. तो आप क्या स्पेशल करने वाले हो आज? मैं क्या स्पेशल, जो स्पेशल जिसने कर लिया है उसके बाद ही होता है ना. But even during performance also you do it on award function. Why not? What can you do? You don't perform? I'm not performing. अच्छा. But experts say that this is the only award जो honest है. काफी मस्त मान है. सभी honest होते हैं. I'm sure. Yeah, of course. Republic Day is coming on. So any wishes would you like to give for you? Happy Republic Day to all. That's it. Right. I really hope they do well because the way they've been batting now, it's really sad. And I really hope that they all get together and play really well. But the tabloid printed that you were into some legal troubles on 31st of Jan. No. Let me tell you, you're looking beautiful. Tell us something about your attire. Whom you're wearing tonight and about your ear. I'm wearing Dimi by Gabriela Dimitriad, and the ear cuffs are Curio Cottage, and this is also Curio Cottage. So तो कितने excited हो 60th Filmfare Awards को लेकर? बहुत excited हूँ यार. Filmfare is always exciting, and it's the award show that everyone looks forward to. In fact, as actors also we wait that Filmfare आने वाला है. So very excited. Let's see who wins. Actor actress पूरे साल इतनी मेहनत करते हैं ब्लैक लेडी घर लेके जाने के लिए. तो अब
Are you doing something special here? As of now, I'm not doing anything and I can't say much. But yes, of course, मुझे भी अच्छा लगेगा कभी मैं ब्लैक लेडी जीतूँ. And yes, we do work hard through the year. और मुश्किल से साल में एक फिल्म रिलीज़ होती है सबकी, तो उस फिल्म के लिए जब आपको अवार्ड मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है. What are the films that you think deserve the Filmfare this time? Which is your favorite? This year, I actually really like Mary Kom, and I think it should win. Also, World Cup is right around the corner. Obviously, everyone's rooting for the team India. Which are the players you are looking forward to watching on this series? I think Virat Kohli is just taking it with the swing of the bat, so I'm really excited. I hope that Virat just keeps his game up, and of course, Team India, man. नया साल है, तो what's next after Shivani career? I have just finished shooting for Bank Chor, which is Yash Raj, and Babu Ki Jawani, which is a UTV film, and both are going to release first half. So I'm very excited. 2014 is a big year, so looking forward. ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका इस मेडिसिन मैं सबको हैप्पी रिपब्लिक डे कहना चाहूँगी. बी a proud Indian because our country is beautiful. My dad was in the army, so I relate very well to the Republic Day. So I'm looking forward and happy Republic Day. Thank you. Thank you, yeah. I'm wearing TMS, the maroon suit. And Bo? Huh? Bo is also TMS. Shoes are Vans. So there you go. कितने excited हो 60th Filmfare Awards के लिए? I'm very good. मैं आज host कर रहा हूँ, तो थोड़ी बदमाशी होगी, थोड़ी टांग खींचनी पड़ेगी, and I'm hoping to get out of the night alive. So. Target set किया है किसकी टांग खींचने वाले हो? I think जो भी टांग मिलेंगे मैं खींच लूँगा यार, जो भी हो. But कुछ तो दिमाग में रख के आए होगे. Tell us something about that, which is hidden. I think Arjun, Alia, all of them will make fun of them again. लेकिन एक्टर और एक्ट्रेस पूरे साल इतनी मेहनत करते हैं तो गेट द ब्लैक लेडी हो. Yes. आप क्या स्पेशल करने वाले हो apart from hosting? I'll congratulate them. I think they've worked very hard. They've all had a good year. So hopefully, I think along with a round of applause, you should also pull their leg a little. But so we are having a great year. You just got married. Yeah. We don't see your wife with you. You're +1. My comedy festival starts tomorrow, and my wife is my events head. So she's at the office right now, and I'm here. That's really bad. You didn't get her. But she's a working woman, and I support her career. So there you go. But फिर क्या ये भी बात सच है कि दिल्ली बल्ली का भी कोई सीक्वल या फिर पार्ट बनने वाला है? वो whispers होते रहते हैं. When the whispers become yells, then I'll know it's happening. So. But experts do say that कि Filmfare ये कैसा लौटा अवार्ड है जो ऑनेस्ट है, क्या ये बात को आप मानते हैं? क्या? Sorry, what is the? Filmfare कैसा अवार्ड है जो ऑनेस्ट है? I think it's the most credible awards. I think it's an honest award ceremony as well. So absolutely. Yeah. Also, World Cup is right around the corner. Yeah. You're supporting Team India, obviously, but Boys in blue. So blue for you. All the best. Republic Day. Hi, this is Veer Das wishing everybody a happy Republic Day. Watch the parade. I watch it every year. Thank you so much. So looking beautiful. Who you wearing Oh, tonight? sweet. Thank you. This is Hugo Boss, and this is Judith Lieber. Yeah, that's about it. I'm very minimal. I'm excited for Ideas Filmfare 68 awards. I am. लेकिन हर एक एक्टर और एक्ट्रेस पूरे साल इतनी मेहनत करते हैं तो गेट द ब्लैक लेडी हो. आप क्या स्पेशल करने वाले हो आज? To take the black lady home. I'm not getting the black lady this time because I'm not nominated. I'm just there to cheer up for all the other people who've worked all, this entire year. I got the black lady home last year, so I'm pretty happy, and I'm just hoping that, I'm going to see some fun tonight. Yeah, and I hope all the best ones win. Who's my favorite? There's nobody favorite as such, to be honest. Everybody has done such a fab job this time. I mean, it's such a difficult call. It's like the toughest question this year, who's going to win it, because it's been a really tough competition. So, yeah. How's fans shaping up? I don't know. I think you should ask that question to Shah Rukh. But after Shakti, you are acting alongside him. No. I never said that. How can you assume that? She's not in the You're a clever one. Can we hear it from you one? You can't hear it. So Republic Day is on floor. Only the wishes for the viewers. Okay, happy Republic Day, people. It's my parents' anniversary on the very same day, so you can wish them, vice versa. Yeah, thank you. Everyone's rooting for Team India. World Cup is right around the corner. What are your thoughts? Who are you looking forward
watching on the screen? Okay, to be very honest, I'm not a big fan. But if there are people around me, my friends rooting and rooting for somebody, I think I'm just going to join the gang. Great. Can you pose for a camera for a second? No. excited to 60th Filmfare Award? It's always exciting to be at Filmfare, and we're really looking forward to a fun and a wonderful evening, applauding our subordinates and our colleagues. Also, how's married life treating you? I'm guessing this is the first sort of awards night that you guys will be going to together. That's true actually. This year we haven't made it to anything together yet. Either I'm not there or Dia's not there. But yeah, this is going to be the first one together. But experts say that एक ही ऐसा एक लौता अवार्ड फंक्शन है फिल्मफेयर जो ऑनेस्ट है चीज़ों को लेके, ये बात को आप अग्री करते हो? It's the most senior of all awards. It's also one that is very, very respected. जब मैं बचपन के बारे में सोचती हूँ तो मुझे ये एक लौता अवार्ड याद आता है जहाँ पर with great fascination we would sit in front of our television sets and watch it. And I think it's that memory, that nostalgia, and what it has carried forward as a legacy that makes it so special. This is the new year, जनवरी का मंथ है, तो एक एक्टर और एक्ट्रेस पूरे साल मेहनत करते तो गेट द ब्लैक लेडी हो, तो इस साल आप क्या करने वाले हो इसमें? Well, we hope we can make films that will help us earn the Black Lady, and we look forward to being able to do that. Only the 26th January short film, Republic Day wishes for the viewers. Here's wishing all my fellow Indians a very, very happy Republic Day. Thank you, Dia. Thank you. Yeah, no, I'm not hosting it. Veer is hosting. How excited are you for 60th Filmfare Awards? I'm really excited. I'm always excited. I have a full record of attending Filmfare Awards from the, I think since it started, since the nomination setup started, I have a full 100% attendance record with Filmfare. तो एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे दो, सबसे ज़्यादा Filmfare Award किसके पास है? सबसे ज़्यादा गुलजार साहब के पास है ना? हाँ. एक साल पूरे साल में एक्टर और एक्ट्रेस पूरे साल इतनी मेहनत करते हैं टू गेट द ब्लैक लेडी हो, जी. ये नया साल है, न्यू बिगनिंग है, आप इस साल क्या स्पेशल करने वाले? देखिए, देश का सबसे बड़ा मोस्ट आर्काइव्ड अवार्ड है, नेशनल अवार्ड है, फिल्मफेयर अवार्ड है, दोनों बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑनर्स हैं, तो जाहिर है कि जीतना बहुत बड़ी बात होती है. मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी जब मैंने अपनी पहली फिल्म के लिए मैंने अपना फिल्मफेयर अवार्ड जीता. इट वाज अ बिग ऑनर फॉर मी, और आज भी मेरे बेडरूम के टेबल पे एक ही अवार्ड पड़ा है, मेरा फर्स्ट फिल्मफेयर अवार्ड. तो इट्स अ वेरी बिग डील फॉर एनी एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, फिल्म मेकर, टेक्नीशियन टू विन एन अवार्ड, और इसलिए हम हर साल आते हैं टू सपोर्ट दिस wonderfully archived institution called Filmfare. Well, my favorite film of the year is Queen, and undoubtedly everyone seems to kind of be in agreement. But there were some great films. There was PK, there was Heather, there was Queen. I'm not mentioning the names of the films we produced, but these are some of the films that I absolutely love. But current experts का ये कहना है कि Filmfare एक ऐसा लौता अवार्ड है जो ऑनेस्ट है चीज़ों को लेके, ये बात को आप अग्री करते हो? देखिए, ये मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ कि Filmfare की अपनी एक प्रोसेस होती है जो इन अ सेंस इज़ द फेयरेस्ट, क्योंकि वो पॉपुलैरिटी और जूरी को बैलेंस करती है. तो मैं आई एम नॉट ऑल फॉर जस्ट जूरी ऑफ 8 मेंबर्स और जस्ट पॉपुलैरिटी, तो एक साथ एक सर्टन बैलेंस. लेकिन हर साल कोई खुश होता है तो कोई दुखी, तो वो दैट प्रोसेस कंटिन्यूज. I'm actually here to talk about Filmfare, and I will touch upon no other topic. But only 26 January is on for Republic Day, only the wishes for the people. Well, I'd like to wish all the viewers a happy Republic Day. Stay free, stay happy, and do your bit for your country. You must. I am here for Filmfare. Indian team, Achita Diwali, Good evening. Thank you. Check now my label. Something I can't
can't pronounce it correct. I don't want to get messed up for it. लेकिन लोग नहीं कह रहे कभी जूनियर करीना कपूर आ गई है हमारे इंडस्ट्री में, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? अभी ये बहुत पुराना क्वेश्चन फिर से आई डोंट नो रिपीट हो रहा है. ऐसा कुछ नहीं है. आई फील लाइक एवरीबडी इज देयर ओन पर्सन. आई कीप सेइंग दैट आई एम वेरी वेरी बिग फैन. और जब लोग कहते हैं मैं बहुत फ्लैटर हो जाती हूँ, बट आई डोंट फील इट्स एनीवेयर क्लोज टू बीइंग ट्रू. एक्साइटेड फॉर फिल्मफेयर अवार्ड 60th अवार्ड. Yes. I was there, so I can say it was outstanding. It's the most amazing thing two actors and of course Karan could do, and even the AIB team and everybody else on the panel. It is just a night to go, and I mean, if you all watch it, you also have to let go of all the questions and all the burdens you have in life and just enjoy that video. It's really something very very gutsy to do. अरे आपने लास्ट ईयर तो बहुत मेहनत कर ली, तो ये साल न्यू बिगनिंग है. एक्टर और एक्ट्रेस का एक ही सपना होता है कि साल भर मेहनत करो और ब्लैक लेडी करने के लिए. आप क्या स्पेशल करने वाले हैं? मेरा एक्चुअली बस यही मेहनत है कि साल भर मेहनत करूँ, एंड ईच फिल्म गेट्स द सेम अमाउंट ऑफ लव एंड द एफर्ट दैट आई पुट इन, और वही हुआ मेरे साथ पिछले साल. आई डोंट नो अबाउट विनिंग द ब्लैक लेडी, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू विन द ब्लैक लेडी एंड टेक हर होम. But it's not only about that, it's also about the audience, and I feel audience is king. But are you ventured with AI All India Box? No, I'm not ventured with them at all. I'm very very fond of them. I think they're very talented too. It's by chance happened that I've done a lot of work with them. Genius of the Year being my most favorite. लेकिन स्टार्स खुद आपके खुद का मजाक बनाते हैं, तो ये आई थिंक ये बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि हम लोग मतलब पीपल आर कॉन्स्टेंटली मेकिंग फन आउट ऑफ यू. हाँ कि कुछ ना कुछ बोल रहे, क्यों ना आप खुद का ही मजाक उड़ाओ. देन नोबडी कैन से एनीथिंग, एंड इट्स सपोज्ड टू बी अबाउट हैविंग फन. यू शुड बी एबल टू मेक अ जोक ऑन योरसेल्फ. आई ऑलवेज डू इट. मीनिंग हाउ मेनी जोक्स ऑन मी एंड रीच्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड नाउ. Like this. I have nothing to say. आपने इतना अच्छा गाना गाया तो हमारी नहीं फिर से कैसे गाना गाऊंगी? 26 January you have to do for a country. No, I have done enough now. You take the video from that guy and put it on your channel. Wishing you a very happy Republic Day. Bye.